सब लोग बड़ा पार्टिसिपेट करो, सब लोग आंसर मुझे देने चाहिए सब, या तो मैं इंडिविजुअली सब लोग को नाम ले लेके पूछूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा। चल बड़ा नेक्स्ट, relative frequency is also called to be as dash. Correct, Adrian. Very good. Good, Kusum. Very good. Very good, bro. Perfect. It is called to be as a frequency, bro. Dash can be expressed in terms of percentage. जल्दी जल्दी बड़ा फटाफट जल्दी जल्दी स्पीड में. Correct. The answer for that is relative frequency. Chalo, very good, bro. Next. Dash is used for carrying out the comparisons between two or more distributions. Relative frequency is used for dash. Okay, Cyril. Correct. It has been used for carrying out the comparisons. Chalo, next. By simple question के answers तुम लोग ने दे दिए मुझे. Now I will increase the level of the question, and my question is, the relative frequency, it lies in the range of option A 0.5 to 1.5, option B -1 to 1, option C 0 to 1, option D -0.5 to 1.5. एक ने आंसर सी बोला, इससे सब लोग ने सी बोल दिया. एक ने आंसर बोला सी, तो सब लोग ने सी बोल दिया. और ऐसा तो रीजन है तुम लोग के पास, रीजन. Relative frequency lies in the range of, Lipsa, Angelina, relative frequency lies in the range. रेंज बताना है, रेंज. मैंने ऑप्शंस दिए थे तुम लोग को सबको, 0.5 to 1.5. सेकेंड ऑप्शन -1 to 1. ऑप्शन सी 0 to 1. ऑप्शन डी -0.5 to -1.5.
ओके, चलो योर आंसर इज करेक्ट बड़ो। बट यहाँ पे ध्यान दो, जब मैंने तुम लोग को बड़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में बड़ा फाइंड करके बताया था, तो वो टाइम पे मैंने तुम लोग को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो, सॉल्व करके दिखाया था बड़ो। कैलकुलेटर अगर तुम्हारे पास है बड़ो, तो ये सारे आंसर्स बड़ा चेक करो। ये सारे आंसर्स तुम्हें 0 to 1 के बीच में मिलेंगे बड़ो। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी बड़ो कि तुम लोग ने स्मार्टली नेगेटिव नंबर को बड़ा वहां से डिलीट कर दिया था। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा बड़ो। 4 ऑप्शंस थे, जिसमें से बड़ा 2 रेंज तो नेगेटिव थे। तो सबसे पहले 50-50 कर लेना चाहिए था, नेगेटिव ऑप्शन निकाल देने चाहिए थे। और बाकी 2 उसमें बड़ा पॉजिटिव में तुम्हें ये लॉजिक लगाना चाहिए था कि सर, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में न्यूमरेटर जो है वो हमेशा बड़ा डिनोमिनेटर से लेस ही होता है। एंड सिंस बड़ा न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर, therefore therefore the answer for that it was lying between 0 to 1. इंस्टीट्यूट बड़ा अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछ दे बड़ा, तो उसका आंसर बड़ा तुम्हें पता चलना चाहिए। We can express that frequency बड़ा in terms of percentage। जनरल बड़ा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो 0 to 1 के बीच में ही मिलता है बड़ा में। Savio, Savio, it is up to us बड़ा कि if we want to express that frequency in terms of percentage तो we do बड़ा। अदरवाइज वो टेबल देखा नहीं तुमने, वो टेबल मैंने दिखाया था ना बड़ा उसमें, जिसमें मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके बताया था। आंसर वॉज बेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ये देखो बेटा मैंने किया है ना यहाँ पे, ये बादल बनाया हुआ है, देखो देखो, जूम भी किया मैडम, तुम लोग भी एक्स्ट्रा जूम कर सकते हो बेटा। ये आंसर चेक करो सब लोग बेटा। इन ईच आंसर बेटा, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर बेटा, therefore the answer lies between बेटा 0 to 1। very important MCQ बेटा, which can be asked बेटा in the exam बेटा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, नंबर 2 which is called to be as density frequency। We are going to start with the second frequency, and that second frequency it is called to be as a density frequency। And again as usual it is the same when we are going to study about the term density frequency, so in that case it is compulsory कि each and every student they should know कि sir what is a density frequency, what is a density frequency, density frequency, density frequency, it is been defined to be as a ratio, to be as ratio bola ratio of the class frequency to the width of a class।
plus frequency to the width of a class. अब भाई last time बड़ा relative frequency में it was a ratio of a class frequency to the total frequency. It was the ratio of a class frequency to the total frequency. This time density frequency is a ratio of a class frequency to the width of a class. बेटा तुम लोग उसे width of a class बोलो, size of a class बोलो, या फिर उसे बेटा length of the class बोलो bro. It is all considered to be as one or the same. It is all considered to be as one or the same. सेम बेटा सेम सेम सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था विड्थ, साइज, लेंथ, इट इज कंसिडर्ड टू बी एज द सेम. एंड नाउ depending upon which let we study the formula of density frequency. Formula of density frequency. Density frequency. So in that case, very good. When we talk about the term density frequency, so density frequency, it is been defined to be as uh, it is defined to be as a ratio of a class frequency to the width of a class, and therefore the formula of density frequency is class frequency upon width of a class, or density frequency is class frequency upon size of a class, or density frequency is class frequency upon the length of a class. It is हमारी आवाज पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस
और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी हमारी का आवाज साथी। अब आ रही है ना आवाज? चलो उठो। ना उठो, मुझे ये बताओ उठो सब लोग। In the second example, tell me the width of the class interval or the size of the class interval is same kid is not same. बताओ बड़े, in that case, what is the width of the class is? Correct, brother. So by knowing the class frequency and by knowing the width of the class, सबसे पहले बड़ा ध्यान से चेक करो, मैंने भी हर एक क्लास इंटरवल के लिए बड़ा डेंसिटी फ्रीक्वेंसी फाइंड किया हुआ है बड़ा। हर एक का आंसर बड़ा चेक करो, मुझे फ्रैक्शन में मिला है बड़ा। तो लाइक और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ा, like relative frequency, density frequency, it is also obtained in terms of, it is also obtained in terms of fraction, it is also obtained in terms of fraction, but like a relative frequency, like a relative frequency, we don't express this frequency in terms of percentage. We don't express this frequency in terms of percentage. अच्छा, तो क्वेश्चन इज कि सर क्या हम लोग उसे परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट यूजुअली वी डोंट एक्सप्रेस that frequency in terms of percentage because like a relative frequency डेंसिटी फ्रीक्वेंसी का जो यूज है वो उतना नहीं है। वी डोंट यूज मच डेंसिटी फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रैक्टिकली कहीं पे भी बड़ा यूज नहीं होता है कि नहीं? इट इज यूज ओनली थियोरेटिकली इसलिए यूजुअली वी डोंट express this frequency in terms of percentage.
we don't express this frequency in terms of percentage. तीनों में सबसे ज्यादा सिंपल इजी कौन है? मीन, मीडियन एंड मोड में सबसे जो सिंपलेस्ट एवरेज जो है वो मोड है। मोड इज कंसीडर्ड टू बी एज द सिंपलेस्ट एवरेज। तो इवन फॉर दैट सिंपलेस्ट एवरेज, even for that simple average, this density frequency, it is been unused. It is been unused. Correct. ओम मैं क्या बोल रहा हूँ समझा सबको? That means density frequency, it is been unused. यूज नहीं बोल रहा हूँ, it is the unused. Density frequency is unused in the calculation of model distribution, comma bimodal distribution and multi-modal distribution. Density frequency is unused. Density frequency is unused in the calculation of model distribution, bimodal distribution and multi-modal distribution. When we talk about the term model distribution means model distribution means the distribution in which there lies only one mode. It is called to be as model distribution. The distribution in which there lies two modes, then it is called to be as by model distribution. And the distribution in which there lies more than two modes, then it is called to be as multi-model distribution. तो दिमाग कहीं ना कहीं बड़ा सोचता तो है ही। तो सर व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग दिस डेंसिटी फ्रीक्वेंसी? तो आंसर टू दैट क्वेश्चन इज the density frequency it is being used in a graphical representation. It is being used in a graphical representation.
I repeat once again, density frequency, it is being used in the construction of histogram. Whenever we want to find the area under the histogram, area under the histogram, that area under the histogram can be obtained. It can be obtained by using histogram. And now over your screen again, you will be getting a histogram. And now see here, over the screen, you will see that diagram, histogram. See the diagram, histogram. If we want to find the area under the histogram, area under the histogram. So you can see that okay, histogram, it is comprising of rectangles which are being called to be as bar. And we know that okay, area of a rectangle is equal to length into breadth. Length is the longest side, whereas the breadth is the shortest side. The length of a bar, it is proportional to a class frequency, whereas breadth of a rectangle, it is proportional to the width of a class. That means indirectly, here we are using the class frequency and the width of the class, or indirectly, we are using the class frequency and the size of a class. But we know that class frequency and the size of the class, it belongs to which type of frequency? बताओ बड़ा फटाफट आंसर दो मुझे. It belongs to which type of frequency? Class frequency and the width of a class. ये हम लोग ने कहाँ पे यूज किया? मैसेज करो मुझे फटाफट. Correct, we have used in a density frequency. Correct. That means density frequency is used in the construction of histogram. And now you answer my questions. You try to answer my questions. First, density frequency, it is equal to option A, class frequency upon the width of a class. Option B, class frequency upon the size of the class.
Option C, class frequency upon the length of the class. D, all above. Anushka, wrong. Correct madam. The answer is option D, all above. मैंने बोला था width बोलो, size बोलो, length बोलो, it is all exactly one or the same madam. Next, density frequency is equal to what? Class frequency upon the dash. Correct. Weight, size, length, it is correct madam. Dash is used in the construction of histogram madam. Correct madam. Density frequency is used in the construction of density frequency, but it is used in the construction of good madam. Dash is unused in the calculation of model distribution, bimodal distribution, and multimodal distribution. Chalo, very good. Here we complete two important types of frequency, which is called to be as relative frequency and density frequency. With respect to this two, you want to ask any doubts? Avishankar, length is proportional to class frequency and breadth it is proportional to the width of a class. Length is proportional to the class frequency and breadth it is proportional to the width of a class. And then by knowing the length and breadth, you can find the area. Chalo, we'll stop here. Next episode will continue with the last part and then we'll start with the new topic. Okay. Till then, everyone take care, stay home, stay safe.